बचाओ बचाओ, हेल्प मी, ऐसे मत बोलना. Right, I'll give you some really advanced alternative example. For example, ऐसे बोलोगे गवार लगोगे, देहाती लगोगे. Right, अंग्रेज लोग ऐसे नहीं बोलते. I agree with you, sir. Come on, use some better alternative. लड़की वड़की को प्रपोज नहीं करना जैसे Hey Anjali, I love you. Does your mind go blank while speaking English? Do you sometimes struggle to find the right words? Suppose when you start speaking, your mind entirely goes blank and you don't know what to say. It can happen with you in school, in college, probably in business meetings. If it has happened with you, then do not worry. In this video lesson, I'll be sharing one magical technique by which you will never ever be tongue-tied again. Actually, these things used to happen with me when I was a learner. When I used to start speaking, मेरा दिमाग एकदम blank हो जाता था, एकदम वाट लग जाती थी. He is right. But I worked on myself, and by using this magical technique, I was able to change myself. So इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि आपको कुछ नया और इफेक्टिव सीखने मिलने वाला है. और इस टेक्निक को हम कहते हैं सेंटेंस स्टार्टर टेक्निक. Right? It is one effective way to combat or to remove hesitation. And when your mind goes blank, you run out of ideas. But the question is, कैसे हम start करेंगे sentence को? इसीलिए we have got sentence starters. ऐसे ऐसे sentence starters जो आप sentence के starting में use कर सकते हैं. You can use the sentence starter exactly at the beginning of a sentence. It will give you the platform, it will give you the foundation, and it will give you the push. ये आपको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेगा, एक फाउंडेशन, एक बेस देगा और आपको धक्का भी देगा. हाँ, छत से नहीं. Right, it will give you a push by which you will be able to speak properly. So ladies and gentlemen, the very first sentence starter is, right, when we are going to start a presentation or topic. किसी भी presentation, किसी भी topic पे अगर आपको बात करना हो तो starting में आप क्या use कर सकते हैं? I'll give you some advanced alternatives. आप topic की शुरुआत ऐसे करके भी कर सकते हैं. To begin with, right? आप ये भी use कर सकते हो. Let's kick things off by discussing. Let's kick things off by discussing this particular project or this work or whatnot. एक और advanced alternative है to start off. To start off. One example sentence is, to start off, let's discuss the impact of air pollution on the environment. Now, before we start with the second sentence starter, I have a question for you, right? And the question is, what's the biggest challenge you face when delivering a presentation? आपको क्या प्रॉब्लम होती है जब आप प्रेजेंटेशन या किसी टॉपिक पे बोलने जाते हैं लोगों के सामने? राइट, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा. और हम आते हैं सेकंड वाले के पास. वो है जब आपको किसी से मदद मांगनी होती है. When asking for help, right? You need help or assistance. तो क्या करोगे? बचाओ बचाओ, help me. ऐसे मत बोलना. Right, I'll give you some really advanced alternatives. आप लोग कह सकते हैं, could you guide me through? Could you guide me through? दूसरा, could you assist me with? Could you assist me with? एक और, would you mind explaining the process? Or would you mind explaining this? Would you mind explaining that? एक और, can you offer any tips? Can you offer any tips? Just like my students, right? They ask me, sir, can you offer any tips to speak fluent English? Can you offer any tips to speak English like natives? भाई लोग, कोई इंजेक्शन या गोली है नहीं जो मैं दे सकता हूँ. Practice करिए and you will be fluent and you will be able to speak this language effectively. अब जो third sentence starter है, it is for expressing agreements. When you agree with someone, तो sentence को हम कैसे start करें? दिमाग में तो आता नहीं होगा. That's the reason why I'm going to share few advanced alternatives. If you agree with someone, ऐसे मत बोलिए I agree with you, sir. Come on, use some better alternatives like I fully concur with you. कैसे बोलते हैं? I fully concur with you.
I completely align with whatever you have said. I completely align with whatever you have mentioned, right? I wholeheartedly support your views. I wholeheartedly. ये whole का मतलब छेद वाला whole नहीं होता है, right? दिल में छेद हो गया. No. Wholeheartedly. WHOLE. I wholeheartedly agree with you. Now, the next one, proposing an idea. अभी किसी लड़की वड़की को प्रपोज नहीं करना जैसे hey अंजलि I love you no proposing an idea it means आपको कोई idea या कोई suggestion आप present करना चाहते हैं then you can use this alternative I would suggest that. What's the alternative? I would suggest that. Next one, how about we consider? कैसे बोलते हैं? How about we consider this, that or whatever. Another one, perhaps we could explore this. Perhaps we could explore this और जो भी चीज़ है आप mention करिए. Right? Another one, I recommend that. I recommend that. Fifth one, asking for clarification. जब आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए हो, when you need more information related to something, right? Then you can use these sentence starters. Number one, could you elaborate on? सपोज आपके मास्टर साहब ने आपके बॉस ने ये बता दिया लेकिन आपको कुछ और जानकारी चाहिए तो आप बोल सकते हो माई बाप कुड यू एलॉबरेट ऑन कुड यू एलॉबरेट ऑन और भी बोल सकते हो कैन यू प्रोवाइड एडिशनल कॉन्टेक्स्ट कैन यू प्रोवाइड एडिशनल कॉन्टेक्स्ट राइट एक और है वुड यू माइंड क्लैरिफाइंग द स्टेप्स राइट वुड यू माइंड क्लैरिफाइंग द स्टेप्स रिलेटेड टू एक्स वाई जेड जो भी चीज है आप वहां पर मेंशन कर सकते हैं एक लास्ट वाला कुड यू ऑफर मोर इनसाइट राइट कुड यू ऑफर मोर इनसाइट इनटू व्हाटएवर इज द टॉपिक कुड यू ऑफर मोर इनसाइट ऑन द प्रोजेक्ट कुड यू ऑफर मोर इनसाइट ऑन दिस टॉपिक इसको यूज करिए और हमको कमेंट्स में जरूर बताइए कि ये इफेक्टिव है कि नहीं. By the way, my name is Vivek, and if you find this video lesson informative, please drop a like, subscribe to the channel if you haven't already, share भी करिएगा अपने मित्रों के साथ, do share it with your friends, right? अब चलते हैं कहाँ? Next one के पास. अब next है examples देने के लिए. ऐसे बोलते होंगे फॉर एग्जाम्पल ऐसे बोलोगे गवार लगोगे देहाती लगोगे राइट अंग्रेज लोग ऐसे नहीं बोलते हैं राइट अंग्रेज लोग बोलते हैं फॉर इंस्टेंस कैसे बोलते हैं फॉर इंस्टेंस फॉर एग्जाम्पल उठा के फेंक दीजिए और क्या अंदर लेके आइए फॉर इंस्टेंस एक ऐसे बोल सकते हो टेक फॉर इंस्टेंस इंस्टेड ऑफ सेइंग फॉर एग्जाम्पल यू कैन से फॉर इंस्टेंस यू कैन ऑल्सो से टू इलस्ट्रेट क्या बोल सकते हैं to illustrate. Now, अब topic को खत्म करना है. Now, right, when you have to end the topic or the presentation, do we have any advanced alternatives? Of course we do. Right? आप कह सकते हैं to sum up. क्या कह सकते हैं? To sum up, today I gave a presentation on X, Y, Z and this is what we have. ये भी कह सकते हैं in conclusion. क्या बोल सकते हो? In conclusion. Conclusion मत बोलना that's incorrect pronunciation. In conclusion you can also say to summarize. क्या बोल सकते हैं to summarize और जो भी चीज़ है आप उसको आगे mention कर दीजिए. देखिए अगर इन sentence starters का आप इस्तेमाल करेंगे it will really help you right. If you are going to use these sentence starters, I'm pretty much confident कि आपको starting में क्या बोलना है, you will have the ready-made material with you, plus you can develop the ideas in your head and you can present it. So ladies and gentlemen, boys and girls, by this we have come to the end of the super informative video lesson and I'm pretty much confident if you apply this technique of sentence starters, your mind is not going to be blank while speaking English. You will have the material in your head which is going to help you in starting the sentences. And if the video lesson is informative, you know what to do, right? If you have any questions or any suggestion or any feedback, feel free to mention it in the comment section. And again, I thank you very much for supporting me and I wish you guys all the best. And I'll see you in the next one.